Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rawal, Standard Ninth, Subject Science. Today is our revision lecture of chapter number 2. Chapter ninth, chapter number 2 is Matter Around Us Pure. Okay. In previous lecture, we have studied what is solutions, then we have studied the properties of solutions, then concentrations of a solutions. Okay. Then we have also studied what is the suspension, है ना. सस्पेंशन क्या है वो भी हमने देखा. ओके. देन इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड Tyndall effect. Okay, so Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water, which acts as a particles of colloid dispersed in air. Okay. Then properties of colloid. यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ colloid solutions. तो colloid is a heterogeneous mixtures. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. They do not settle down when left undisturbed. That is, colloid is a quite stable. Colloid जो है वो stable solutions होते हैं. They cannot be separated from the mixtures by the process of filtrations, but a special technique of separation known as centrifugations can be used to separate the colloidal particles. The components of colloidal solutions are the disperse phase and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. Colloids are classified according to the states. Okay, so there are three states of medium: solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life. Okay, here some examples of colloid solutions. First, dispersion phase, then dispersion medium type and their examples. Okay, liquid तो gas, type of aerosol, examples for clouds and mist. Then solid, solid में भी gas है. Okay, type aerosol, example smoke, automobile and exhaust. Then gas, dispersing medium liquid, then type form, then shaving cream. देन लिक्विड, तो लिक्विड जो है वो इमर्जन, मिल्क, फेस क्रीम. सॉलिड, डिस्पर्स फेस सॉलिड्स. डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड है, टाइप है उसकी सॉल है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. देन डिस्पर्स फेस, इसमें गैस लिखा है. डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो सॉलिड है, टाइप फॉर्म है, फॉर्म रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमाइस. देन लिक्विड में सॉलिड, जेल, जेली, चीज़ एंड बटर. देन यहाँ पे डिस्पर्स फेज में सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, टाइप है सॉलिड सॉल एंड कलर्ड गैमस्टोन, मिल्की और ग्लास. Topic 2.3, separating the components of a mixtures. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separations are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixtures. Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constitutions by simple physical method like hand picking, sieving, filtrations that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separations of the components of a mixtures. Okay,
So topic 2.3.1, how can we obtain colored component dye from blue black ink? So here one of the interesting activity there, activity 2.4. Fill half a beaker with water. Put a watch glass on the mouth of the beaker. Put few drops of ink on the watch glass. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see that evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. Observe carefully and record your observations. हमें अपने observation जो है वो record करने हैं. Okay, here is the inbuilt questions. We find that ink is a mixture of dye in water. Thus, we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporations. Okay, so activity 2.3.2. How can we separate cream from milk? हम कैसे जो है वो cream जो है वो निकाल सकते हैं. Nowadays we get full cream tone and double tone varieties of milk packed in poly packs or tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. Take some full cream milk in a test tube. Centrifuge it by using a centrifuging machines for 2 minutes. If a centrifuge machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese from milk. कैसे बनाते वो हमें देखना है. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration techniques cannot be used for separation. Such mixers are separated centrifugations. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. Okay, here are applications that are used in diagnostic laboratories for blood and urine test, used in dairies and home to separate butter from cream. ओके ये सारे यूजेस है जहाँ पे वो यूज़ होता है. यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. ओके ये उसके एप्लीकेशंस है. एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके देन टॉपिक 2.3.3, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स of two immiscible liquid. Okay, here are activity there. Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. Pour some mixtures of kerosene oil and water in a separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. Close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. है ना, ये इसका डायग्राम है. सेपरेशंस ऑफ इमिजिबल लिक्विड्स का डायग्राम है. तो उसके एप्लीकेशंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिया है. टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their density. उसकी density के हिसाब से उसमें change होता है. Okay, then how can we separate mixtures of salt and ammonium chloride? हम कैसे अलग कर सकते हैं. वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating. So, to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity,
salt in this case. The sublimation process is used. Some examples of solids which sublime are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracite. ओके, यहाँ पे जो है वो डायग्राम दिया है. Is the dye in black ink a single color? ओके, जो डाई आती है वो सिंगल कलर की होती है. उसके लिए यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 cm above the lower edge. पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन, वो हमें यूज़ करना है. उसकी इंक यूज़ करनी है कि जो वाटर में है वो सॉल्यूबल हो पाए. ओके. एट द सेंटर ऑफ द लाइन लेट इट ड्राई, उसको ड्राई होने तक रोकना है. लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in figure 2.8b and leave it undisturbed. Watch carefully as the water rises up on the filter paper. Record your observation. हमें हमारा ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करने हैं. ओके, सो क्या आंसर मिलेगा? द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट and the dye is soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. Usually a dye is a mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated. Okay, हम ऐसे जो है वो colors जो है वो अलग कर सकते है. This process of separations of components of a mixture is known as the chromatography. Okay, exam में आ सकता है. What is chromatography? Chroma in Greek means color. This technique was first used for separation of colors, so that the name was given. Chromatography is the technique used for separations of those solutes that dissolve in the same solvent. With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. Okay, यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन हमें दी है to separate color in a dye, pigments from natural colors, drugs from bloods. How can we separate mixture or two miscible liquids? यहाँ पे एक्टिविटी दी है. Let us try to separate acetone and water from their mixtures. Take the mixtures in a distillation flask, fit it with a thermometer. Arrange the apparatus as shown in figure. Heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. The acetone vaporizes condensations in the condenser and can be collected from the condenser outlet. Water is left behind in the distillation flask. Okay. Here the diagram. ये जो है उसका diagram है. Separations of two miscible liquids by distillations. This method is called distillations. ये जो method है वो distillations की method है. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin, fractional distillations process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, etc. The apparatus is similar to that for simple distillation, except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser.
A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly as shown in figure 2.10. Okay, here is the diagram of fractional distillations. Okay student, then our next topic, how can we obtain different gases from air. हम एयर में से जो है ना, हम बोलते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हाउ कैन वी सेपरेट, हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillations. The flow diagram shows the steps of the process. यहाँ पे डायग्राम दिया है. सबसे पहले एयर है, तो compress and cool by increasing pressures and decreasing temperature. Okay. Then arrow किया है liquid air. Allow to warm up slowly in fractional distillations column. Then gases get separated at different heights. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा है -183, -186 एंड -196 एंड परसेंटेज एयर वॉल्यूम लिखा है. ऑक्सीजन का 20.9 है, आर्गन जो है वो 0.9 है और नाइट्रोजन है वो 78.1 है ना. हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि भाई द प्रोपोर्शंस ऑफ नाइट्रोजन इन 78% एंड द ऑक्सीजन इज़ 21% एंड अदर गैस जो होते हैं वो 1% में आ जाते हैं. ओके, इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. द एयर इज compressed by increasing the pressures and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillations column where gases get separated at different heights depending upon their boiling point. Okay, boiling point के हिसाब से उनके जो हाइट है टेम्परेचर के हिसाब से वो अलग अलग कॉलम में रखे जाते हैं. तो यहाँ पे आंसर द एयर एंड द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. हमें उसको ऐसे अरेंज करना है. ओके, यहाँ पे ऐसा डायग्राम है पूरा. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैसे हम अलग कर सकते हैं. ओके, यहाँ से फिल्टर होके एयर जाती है, एयर अंडर प्रेशर में आती है, हॉट एयर होती है, वाटर आउट, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर लिखा है, कोल्ड कॉम्प्लेक्स एयर लिखी है, देन सेपरेटर लिखा है. यहाँ पे नाइट्रोजन आउट, आर्गोन आउट निकल जाते हैं है ना. ये एक्सपेंशन जेट है, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन होता है. ये सारा सिस्टम है. जैसे हम जो है वो अलग अलग एयर में से अलग अलग गैस जो है वो अलग कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. हम इम्प्योर जो सब्सटेंस है कॉपर का, उसमें कॉपर सल्फेट जो है वो कैसे निकालेंगे. ओके, तो कॉपर जो है वो क्रिस्टल है ना. ये पूरी उसकी क्रिस्टलाइजेशन मेथड है. The crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. बहुत सारी impurities उसमें होती हैं. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates pure solids in the form of the crystal from a solutions. Crystallization technique is better than simple evaporation techniques. Okay, उसमें दो जो है वो पॉइंट लिखे हैं. Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtrations. On evaporations, these contaminate the solid. यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन लिखी है कहाँ पे यूज़ होता है. तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलिम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स. Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substance. With advancements in technology, many more methods of separation techniques have been devised. Okay, in cities, drinking water is supplied from water works.
A flow diagram of a typical waterworks is shown in figure 2.13. From this figure, write down the process involved to get the supply of drinking water to your home for the waterworks and discuss it in your class. ओके यहाँ पे जो सिटीज़ में कैसे हम जो वाटर प्योरीफाई करके आता है उसकी पूरी सिस्टम यहाँ पे बताई है. ओके टू होम सबसे पहले क्या लिखा है, रिसीवियर पानी यहाँ पे जमा होता है. देन टू एलो सॉलिड्स टू सेटल, देन टू सेडिमेंटेड द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मीन्स लोडिंग टैंक है. फर्स्ट इज़ द सेडिमेंटेशन टैंक, देन फिल्टरेशन टैंक होती है जिसमें वाटर है, फाइन सैंड है, ग्रेवल है. ओके कॉर्स ग्रेवल है, वो सब अलग होता है. देन क्रोमियम टू किल बैक्टीरिया, फिर क्या करते हैं उसका क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन जो गैस है उसमें पास करते हैं, फिर जाके हमारे घर पे जो है वो पानी आता है. ओके स्टूडेंट, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू.